सो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मर्ज का जो फंक्शन है वो दो सब एरेज को जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, सेपरेटली सॉर्टेड हो, उनको मर्ज कर सकता है इन जस्ट ओ ऑफ एन. सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट रनिंग टाइम if you compare it with the sorting functions such as bubble sort or selection sort जो कि n square time लेते हैं because they are comparing basically every pair of number और उसके मुताबिक सॉर्टिंग कर रहे हैं. बट यहाँ पर अगर दो सेपरेट सॉर्टेड सब अरेज हैं तो ओनली ओ ऑफ वन इज रिक्वायर्ड टू मर्ज देम. सो मर्ज सॉर्ट का जो मेन आइडिया है वो जो जो मेन क्वेश्चन है वो ये सेकंड वन है जो आपको यहाँ नजर आएगा. कैन वी एक्चुअली सॉर्ट एन array by repeatedly performing the merging operation, in other words by repeatedly calling the merge function. Okay. uh, because it seems that if we can do that, then that should lead to a fast way of sorting because merging is efficient. So repeatedly अगर मैं merging करता हूँ तो overall time भी जो है वो कुछ fast रहना चाहिए, और sorting जो है वो efficiently हो जानी चाहिए. And merge sort will be able to accomplish this. But before we go to that how merge sort uses merge to perform sorting, let's see what the challenge is. The challenge is that I want to use merge, but merge already asks for two sorted subarrays. तो मतलब मैंने अगर एक 100 साइज की अरे जो है उसको सॉर्ट करना है तो मैं दो 50-50 साइज की सॉर्टेड अरेज को मर्ज करके ये काम कर सकता हूँ. लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो 50-50 साइज की जो अरेज हैं उनको कौन सॉर्ट करेगा. बट द ट्रिक इज कि आप उनको भी सॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जब आप एक 50-50 साइज की अरे देखेंगे तो आप कहेंगे ओके एक 50 साइज की अरे है, well this is just two arrays of size 25. So if you give me two 25 size sorted arrays I can sort 50. So I will go to the 25 size arrays. But again तो उनको कौन sort करेगा. But again you can divide those arrays into 12 each, right? And the 12 size arrays can be divided into 6 each. And well, 6 each can be divided into 3 each. And the three ones they can be divided into एक size का हिस्सा और एक दो size का हिस्सा. And two size pieces can be divided into one size piece. Now you see that we keep on dividing, keep on dividing, and when we get to this level जहां पर हमारे पास एक single size का piece है, imagine एक single size की array है. Now I don't have to divide because अगर एक single one element array है, it is already sorted. A single element array is already sorted. So मेरी जो रिकरियन है जिसमें मैं डिवाइड करते हुए नीचे आ रहा हूँ, वापस जाते हुए मैं मर्जिंग कर सकता हूँ. बिकॉज जब मैं एक टू साइज की प्रॉब्लम पे वापस पहुंचता हूँ, गोइंग फ्रॉम बॉटम अप, both of its parts which are single size arrays they are already sorted, so I can merge them. Now when I go back to those for example 6 size arrays, then their two child problems of size 3 each are already sorted and I can put them back again. And this is how merge sort is going to accomplish it. So let me go to the code, pseudo code for merge sort. And ये जो बात मैंने अभी आपसे इनफॉर्मली मैंने आपको बताई है, इसको मैं कंक्रीटली वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कोड में हम ये काम किस तरह करेंगे, कैसे मर्ज को कॉल करेंगे विद इन मर्ज सॉर्ट. सो हियर इज द कोड फॉर मर्ज सॉर्ट. ओके. And as I have explained to you, what this code is going to do is that it's going to first divide the array and make the recursive calls. So at this point, I will like you to think of uh, your data structure course और उसमें जो आपको ट्री ट्रिवर्सल्स हमने करवाए थे, उन ट्री ट्रिवर्सल्स में तीन किस्म के ट्रिवर्सल्स जो आपके थे जो प्रेजेंट किए गए थे वो थे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर.
और इनमें से जो पोस्ट ऑर्डर था, उसकी ये खूबी थी कि वो पहले चाइल्ड नोड्स पे जाएगा और वापस आएगा फिर पेरेंट पे। So merge sort is an algorithm, is an example of an algorithm that works in post order, meaning that it first keeps on dividing. So if you look at this merge sort, this function body, it's a very small function. These two are the recursive calls. So originally you want to merge sort an array between left and right. So in the first call, left will be 1, right will be n. So I will check whether there is still some data left in the array, because I don't want to I don't want to do anything when left is equal to right, because that means I have a single size array. So if left is less than right, I enter this if, I compute a mid, and then I make two recursive calls of half size each. So same array A जो है उसका pointer pass कर दिया, और जो indices pass की वो left से लेके mid तक, और फिर mid plus 1 से लेके right तक। तो ये हमारे दो pieces हो गए। So for instance, अगर left 1 था, right 10 था, तो 1 5 और 6 10 ये दो pieces ये बन गए हैं। तो पहले आप इसी तरह रिकर्सिव कॉल्स करते जाते हैं। तो चूंकि ये पोस्ट ऑर्डर में है, तो रिकर्सिव कॉल्स होती जा रही हैं और होती जा रही हैं, और अभी तक आप मर्ज को आपने हिट नहीं किया। और रिकर्सिव कॉल्स पहले बेस केसेस को हिट करेंगी, जहां पर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, मीनिंग के आप इस इफ में हिट ही नहीं करेंगे, राइट, सॉरी, फिक्स दैट। सो आप इस इफ में एंटर ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से बाउंस ऑफ कर जाएंगे। तो जब आप वापस टू साइज की कॉल्स पे जाएंगे, तो उनके जो दोनों सब चिल्ड्रन हैं, दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, एंड देन यू विल बी मर्जिंग देम। ये चीज ज्यादा कंक्रीट आपको नजर आएगी जब मैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। इसका ड्राई रन करेंगे। सो मर्ज क्या करता है? बिफोर आई गो टू दैट ड्राई रन, आई वांट यू टू बी just pay attention to this merge function and see its parameters. Okay, so in the merge function you are passing the same array A, but you're passing three indices. Okay, left, right, and mid. Actually, I may not pass the mid because merge can compute the mid again, right? It's up to you. अगर left और right आप merge को देंगे तो वो mid compute भी कर सकता है, just like it has been computed here, because but since it's already computed, I just pass it. So merge क्या करता है कि वो left से mid तक जो area है, जो कि already sorted होगा because of this call, okay? और फिर right, सॉरी, mid plus 1 से right तक जो एरिया है जो कि sorted होगा because of this call, उनके डाटा को, जो कि सेपरेटली सॉर्टेड डाटा है, उनको मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड अरे बना देगा। अब जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बट यू हैव टू सी कि मर्ज के अंदर जो मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ वो एक वही मेरी जो ओरिजिनल अरे है उसका पॉइंटर है, फिर लेफ्ट और राइट इंडिसेस हैं जो कि वो टोटल एरिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ करंटली, और एक्चुअली मिड भी है। सो एक्चुअली जो दो सॉर्टेड सब अरेज हैं वो हैं लेफ्ट से मिड और मिड प्लस 1 से राइट के दरमियान, और उनको मर्ज करके वापस इसी लेफ्ट और राइट के दरमियान सॉर्टेड डाटा रख देगा मर्ज का फंक्शन। So have a careful look at the parameters of this merge function, and you have to figure out how we can actually implement it. Now let's go to the to a concrete example. Uh, let's do merge sort on a set of numbers on an array and see how this algorithm will actually work. So let's do that. तो ये एक concrete example अब हम merge sort का करने वाले हैं। एक array है, A उसका नाम है, और indices उसकी हैं 1 और 12 के दरमियान। तो जब मैं merge sort की पहली कॉल करता हूँ तो उसमें A पास होगा, और लेफ्ट के तौर पे 1 पास होगा, और राइट के तौर पे 12 पास होगा। इन सारी कॉल्स में जो आपको नजर आ रहा है, मैं ए शो नहीं कर रहा, लेकिन ए भी पास हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट राइट पास नहीं हो रहे। मैंने स्पेस बचाने के लिए ए जो है उसको पास नहीं किया, जस्ट रिमेन्स द सेम, वी पास द पॉइंटर ए।
Now, so let's look at the first call, the top call. So 112. Left is 1 and right is 12. So what happens? Let's look at the code. Left is less than right, obviously. Mid is computed. So when left is 1 and mid is, sorry, and right is 12, तो mid आ जाएगा 6. हम integer arithmetic कर रहे हैं, so 6.5 means 6. So दो recursive calls होंगी. एक होगी 1 से 6 तक और दूसरी 7 से 12 तक. और ये वाली calls जो हैं ये आपको यहाँ नजर आ रही हैं. तो एक ये call हुई और ये call हुई. और ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए हमने array को physically divide नहीं किया. वही array A का pointer यहाँ दोनों जगह पास होगा. हमने सिर्फ indices को स्प्लिट करके लेफ्ट राइट की वैल्यूज को चेंज करके नेक्स्ट कॉल्स में लॉजिकली एरे को डिवाइड कर दिया. एक्चुअली सेम एरे है. सो बट यू नो, हैविंग डन सम रिकरियन, कि 1 6 और 7 12 की जो कॉल है वो इकट्ठी तो नहीं होगी. पहले 1 6 की कॉल हो जाएगी. और 1 6 की कॉल में जब आप जा रहे हैं, सो अब दिस कॉल is only concerned with sorting this portion of the original array from 1 to 6, right? Its job is to sort this part. And how does it do it? Again, it's going to do the same thing as done by the original call. और वो same thing क्या है? 1 6 उसने split कर देना है. Mid compute करना है. Mid आ जाएगा 3. तो एक 1 3 left की call और एक 4 6 right की call होनी है. पर left की call होती है. अब 1 3 जो है, अब हम इतनी सब array पे आ गए. और देखिए अभी तक कुछ sort नहीं हुआ. ठीक है. तो again let me reiterate that merge sort is a post order algorithm, meaning it's going to work, it's going to actually merge in this direction, in the upward direction, bottom up. नीचे जाते हुए कुछ भी नहीं होना, सिर्फ डिवाइड होना है. ऊपर आते हुए मर्ज होना है. ओके. और सारी मर्जिंग होनी है, यानी कॉन्करिंग होनी है. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. सो 1 3 तक हम आ चुके हैं और 1 3 पे फिर दोबारा मिड कंप्यूट होगा जो कि 2 आएगा. ओके. सो 1 2 एंड 3 3 ये कॉल्स हो गई. नाउ 3 3 is a base case. So this will happen after 1 2. Actually first 1 2 call will be made. So 1 2 की जो कॉल है वहां पर अब जो मिड आया वो 1 आ गया. So आपकी जो कॉल्स बनी वो बनी 1 1 और 2 2. These are the first base cases. Actually 1 1 is the first base case. So when you hit 1 1, what happens? इस कोड में आपको नजर आएगा. हम इसमें एंटर नहीं करेंगे because 1 is not less than 1. So you will bounce from the if. And when you bounce from it, basically that means you are returning. आप 1 1 से रिटर्न होके 1 2 पे आ गए. तो अब जरा 1 2 की कॉल के बारे में देखें कि 1 2 की जो कॉल हुई थी उसमें आप इफ में आए थे. यहाँ आपने 1 1 की कॉल इस लाइन पे की थी. अब आप 1 1 की कॉल से फौरन वापस आ गए हैं. और वापस आने का मतलब ये है लॉजिकली कि 1 1 पे जो सब एरे पड़ी है, मीनिंग दिस सब एरे, it is already sorted. And yes, it is already sorted because it is just one element, right? So now 1 2 will go to the right side. And when it goes to the right side, uh, this is the call that's now being made. Okay. Right side पे वो कॉल कौन सी है? वो कॉल है 2 2 की. और अगेन 2 2 फौरन वापस आ जाएगा. और जब ये वापस आएगा, अब आप 1 2 पे खड़े हुए हैं. 1 2 पे वापस आ गए हैं. 2 2 से वापस आने का मतलब कि ये चीज भी सॉर्टेड है, राइट? एंड ऑब्वियसली इट इज सॉर्टेड. एंड नाउ यू सी, हम 1 2 कॉल में हैं और हम इस पॉइंट पे आ गए हैं. And now we are exactly in the situation where we want to be, because merge can now work, because merge now has these two separate sorted arrays. 1 1 is a sorted array, it is sorted in itself. 2 2 is a sorted array, it is sorted in itself, and I can merge them together. Okay, so अब 1 2 अपना merge call करेगा. So now you can already notice that how merge sort has fixed that problem
कि you can only merge when you have two sorted subarrays. So merge sort has said I will work in post order. Obviously at this level, when the arrays are very small, one size child problems will already be sorted. So then I will merge them to solve two size sub problems. And then when these two size problems are sorted, then bigger problems can be sorted using their solutions. So let's continue. So हम merge का function हमारा अब call हुआ 1 2 के ऊपर. Let's have a brief look again in the code. तो हम इस point पे हैं merge पे, और merge पे कोड में आपको नजर आ रहा है ओरिजिनल अरे का पॉइंटर मिला हुआ है, लेफ्ट राइट और मिड मिला हुआ है, मतलब हम यहाँ पर हैं, हमारे पास ए अरे का एक्सेस है और हमारे पास ये 1 1, बेसिकली ये हमारी एक सब अरे और ये 2 2 की सब अरे सॉर्टेड है. तो मर्ज का फंक्शन क्या करेगा? नाउ जस्ट बी केयरफुल एंड सी कि क्या होगा. यू मे बी टेम्प्टेड टू थिंक के ओके ये 14 और 3 है तो बस ये स्वैप हो जाएंगे या समथिंग. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू एक्चुअली वर्क. सिस्टमैटिकली हमने काम करना है. तो सिस्टमैटिकली काम ऐसे होता है, और ये आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा आगे जाके बेहतर नजर आ जाएगा कि क्यों सिस्टमैटिकली हम ऐसा काम कर रहे हैं. एवरी टाइम when you enter into the merge function, it's going to create two temporary arrays. Okay, so it's going to create two temporary arrays. Now remember, जब मैंने आपको merge के बारे में बताया था, तो merge को explain करते वक्त मैंने आपको दो arrays बताई थी पहली वीडियो में. एक है array L, which is the left array, and there is an array R, which is the right array. So merge needs two different arrays. Okay, merge cannot work like this कि इस एरिया में जहां पर एरेज पड़ी हैं वहीं वापस मर्ज कर दे. ये मर्ज नहीं कर पाएगा. और अभी मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि मर्ज ओ ऑफ एन में काम करता है. तो अगर उसने ओ ऑफ एन में काम करना है तो उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये डाटा, ये जो सॉर्टेड सब एरेज हैं, ये कहीं और पड़ा हो, एल और आर में पड़ा हो, और जिन जगहों पे इनको वापस कॉपी करना है वो जगह अलग हो. मतलब इस केस में मर्ज को पहले ये करना पड़ेगा कि ये पहली सब एरे 14 जहां पड़ा हुआ है वो डाटा कॉपी करना पड़ेगा इनटू द एल सब एरे. और ये एल और आर जो है, यू आर प्रोग्रामर्स, यू कैन टेल मी or just tell yourself that what are these L and R arrays and where are they created? Obviously, they are created on heap. They are dynamic arrays. Okay, so I'm temporarily creating these arrays, and then I'm copying data. Left side की सब array का data यहाँ पर copy हो गया, और right का जो data है वो यहाँ पर copy हो गया. Okay, और data को उठाकर यहाँ copy करने का मतलब logically ये है कि अब मेरे पास ये जो एरिया है लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे का, वो एरिया जो कि ओरिजिनल अरे में है, वो अब एम्प्टी है इन अ सेंस के इट इज अवेलेबल टू बी ओवररिटन. और ओवरराइड ऐसे करना है कि हमने मर्ज करना है एल और आर को. अब हम मर्ज का प्रोसीजर चलाएंगे. एंड रिकॉल के मर्ज में आई इंडेक्स होगी, सॉरी, एल में आई इंडेक्स होगी, आर में जे इंडेक्स होगी, के इंडेक्स हमारी यहाँ मूव करेगी ए में, राइट. और यहाँ से डाटा उठा के जब हम यहाँ लाएंगे तो पहले ये 3 आ जाएगा और बाद में ये 14 आएगा. सो यू कैन रिकॉल कि कैसे काम करता था हमारा मर्ज. सो 3 यहाँ आ जाएगा और 14 यहाँ आ जाएगा. ओके, जब एक दफा मर्जिंग मुकम्मल हो जाती है तो मर्ज फंक्शन के एंड पे ये जो एल और आर अरेज हमने बनाई थी, वी डिलीट देम. सो वी यूज द डिलीट कीवर्ड एंड गेट रिड ऑफ देम. So this is what happens at the end of the merge function. When you come back to the array 1 2, sorry, to the function call 1 2, back from the merge, you are here and then you return. Okay, and now 1 2 से return करने के बाद you will go to 1 3. So just one last time, merge के function ने enter होने के बाद दो arrays L और R बनानी है. लेफ्ट सब array का डाटा, राइट सब array का डाटा जो कि sorted होगा ए में से, वो एल और आर में कॉपी करना है, और फिर एल और आर पे मर्ज करके वापस ए में डाटा लेके जाना है, और एंड पे एल और आर को डिलीट कर देना है. ये सारा काम मर्ज ने करना है. अब 1 3 की कॉल है तो हम लेफ्ट साइड से आ चुके हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट 1 2 से वापस आने का मतलब है कि लेफ्ट सब एरे
is sorted, which obviously now we can see it is sorted. So then 1 3 makes its right call, which is 3 3. ये immediately वापस आ जाएगा because ये if से bounce back कर जाएगा. और ये जब वापस आएगा तो इसका मतलब क्या है logically कि ये sorted है. Obviously it is sorted because it is a single element. Now before going ahead in the video, you should just pause it here and sort of do the merge at the call 1 3. Okay, what will happen? So this is what will happen. We will create an array L, right, which is a temporary array on the heap, and this array L is going to, well, data will be copied. तो ये 3 और 14 जो है ये पहले यहाँ कॉपी होगा. ओके, 3 और 14 array L में कॉपी हो गया, और फिर उसके बाद array R बनेगी, और array R में राइट साइड का जो डाटा है वो कॉपी हो जाएगा, विच इज 7, राइट. और अब हमारा मर्ज का फंक्शन कॉल होगा, और मर्ज का फंक्शन जो है, इट नाउ हैज दीज स्लॉट्स अवेलेबल टू ओवरराइट, राइट. सो आई इंडेक्स इधर एल में, और जे इंडेक्स इधर आर में, के इंडेक्स इधर ए के इस एरिया में. क्या होगा, पहले 3 मूव करेगा एल से, यहाँ आएगा, फिर 7 मूव करेगा आर से, वो यहाँ आएगा, और फिर 14 मूव करेगा एल से, वो यहाँ आएगा, और इस तरह हमारा मर्ज कंप्लीट हो जाएगा ओ ऑफ एन के अंदर. लेट मी अगेन रिमाइंड यू that the reason why we have to make these separate arrays is because we want merge to work in O of n. आपको मैं एक होमवर्क असाइनमेंट दूंगा, जो उसमें एक पहला सवाल शायद यही होगा कि what if I want to do merge in the same area? What if I don't want to make these L and R arrays every time? Because every time merge has to create these arrays, copy data here, then in the end delete these arrays. So what if I don't want to make this and just do merge here? You can do it, but then if you do that, you will have to shift data, because देखें कि जो डाटा मर्ज करना है और जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो दोनों एक ही स्पेस में है, तो आपको डाटा को शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा, एंड as soon as you do that, merge will become an O of n square operation. Okay, and we don't want merge to become n square. वो तो सारा हमारा मकसद ही बहुत हो जाता है. So we want merge to remain O of n, and that's why we need this extra space. And because of this, and remember this, this is extremely important. Because of this, we say that merge sort is not an in-place algorithm. So this is a very important word which will be repeated again in this course, maybe multiple times. An algorithm is called in place, if it can perform all its computations within the input space. Meaning जो आपकी input में data storage आई थी, उसी storage के अंदर अगर आप सारा काम कर लें, कोई extra memory create नहीं करते, तो आप एक in place algorithm है. So we have just seen that merge sort is not an in place algorithm. And this is the only bad thing about merge sort, because this makes it a little bit slower than some of the better algorithms that are known. Okay, so we will discuss that, but merge sort cannot be made in place. Just remember that. So there is this one thing in merge sort that is not in place. Now let's continue for a few more iterations ताकि merge sort का जो पूरा लॉजिक है वो आपको मजीद कुछ समझ आ जाए. So what will happen? So I will take a shortcut now. इतना जो सब ट्री है उसको आप खुद से जरा ड्राई रन कीजिए और देखें कि इसकी जो 4 6 तक की जो सब कॉल है, जब यहाँ मर्जिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली 4 6 तक की जो सब एरे है वो सॉर्ट हो जानी चाहिए आफ्टर वी रिटर्न फ्रॉम 4 6. तो ये 6 0 11 जो है, आफ्टर वी कम बैक, आफ्टर वी रिटर्न फ्रॉम द कॉल 4 6, तो ये जो 6 0 11 है, this should become 0 6 11. This is when you return from the call 4 6. So now just let me show you कि 1 6
फिर जब अब आप वापस आ गए ना 16 पे, यहाँ से भी वापस आए थे, अब यहाँ से भी वापस आ गए हैं। तो अब 16 के ऊपर मर्ज कॉल होगा। मे बी दिस इज द लास्ट वन दैट आई विल शो यू। सो 16 पे मर्ज कॉल होगा, और जब 16 पे मर्ज कॉल हुआ तो वो किस-किस के दरमियान है? ऑब्वियसली जो 13 तक सब अरे है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, और जो 4 और 6 के दरमियान सब अरे है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। मर्ज फंक्शन ने इसको मर्ज करना है। So what will the merge function do? Okay. Again, you may pause the video and do it for yourself. तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी। मर्ज एक एल और आर अरे बनाई उसने, 1 से 3 तक जो सॉर्टेड डाटा था 3, 7, 14 वो एल में कॉपी किया। 4 से 6 तक जो सॉर्टेड डाटा था 0, 6, 11 वो आर में कॉपी किया और इस पे मर्ज कर लिया। आई इंडेक्स यहाँ पर एल में चलेगी, जे इंडेक्स आर में चलेगी और के इंडेक्स इस एरे ए के इस एरिया में होगी। और जब डाटा कॉपी बैक होगा तो नॉट डिफिकल्ट टू सी, वी विल गेट फर्स्ट 0, it will come from R, then we will get 3 which comes from L, then we get 6 comes from R, then we get 7 comes from L in this case, and then we get 11 which comes from R, and then we get 14 which comes from L. Merger is complete at this step. Merge function, uh, just before exiting, it's going to get rid of both these arrays. So these are deleted by the merge function. Okay. And now this 16 call is going to return back, go back to the original 112 call. And 112 का अब लेफ्ट साइड से आपने रिटर्न हो गया है, लेफ्ट सब प्रॉब्लम से रिटर्न हो गया है, and see, just as expected, the array between 1 and 6 is sorted. Okay. And now you can see what will happen. So I encourage you to just dry run this entire process once to completely, get yourself acquainted with this algorithm. Dry run it on this entire subtree. ये जो 7, 12 है यहाँ पर क्या होगा? Obviously बेस केसेस से शुरू कर लें और मर्ज करते करते 7, 12 तक आ जाएं, और जब 7, 12 तक आप आएंगे तो ये सारी जो चीज़ है ये सॉर्टेड होगी। एंड देन इवेंचुअली नेक्स्ट स्टेप भी आपने करना है। You're going to make, well, you can already see when you're back here, you will make an array L. That array will get all this data 0, 3, 6, 7, 11, 14. उस array का साइज यहाँ 6 होगा, और फिर मर्ज एक array R बनाएगा और उसमें ये सारा डाटा जो ऑलरेडी यहाँ सॉर्टेड पड़ा होगा वो कॉपी होगा. So actually -1, 0, 2, 4, 5 and 18 will be copied into this R. And then you have a final merge, and that merge will copy back the entire sorted data into this original array. And then that last merge call, when before it returns, it will delete L and it will delete R, and the entire array will be sorted. So this was the merge sort algorithm. It works in the bottom up fashion. It first just divides the array. So while going top down, it's just doing divide, divide, divide. And then when it hits base cases, which are of size 1, it just returns. And that is where it is correct, because one size array is already sorted. And for every call above that, it already has sorted subarrays. So then it just merges them using the technique that I have explained. So this was merge sort. The next question is, how much time is it taking? And it's taking O of n log n. And we are going to explain that. But before I explain how it takes n log n, which is not hard to explain, but I'll explain that, let's just reflect on how big of an improvement that is. So comparing it to bubble sort or comparing it to selection sort, both of those algorithms are O of n square. And you know that n square is actually what? N multiplied by n, right? N into n. So what we're saying is that merge sort is O of n log n, meaning this first component, first factor is the same, but the second factor, log n,
how big of an improvement that is. मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये उतनी ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है जितनी n जितनी के 2 की पावर n से n पे आने की इम्प्रूवमेंट है. It's an exponential size improvement because 2 to the power log n is actually n. So this is an extremely big improvement. So how is that happening? We have seen the algorithm, but we should also now be able to do analysis and prove that this merge sort algorithm is O of n log n. And we're going to do that in the next video.